लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections, Lok Nirnaya 2024. In this program, we'll bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024 कार्यक्रम में चुनाव से जुड़े समाचारों के साथ साथ स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ हम करेंगे चर्चा। इसके अलावा चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे चुनाव तैयारियों के बारे में। आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं राजनीतिक विश्लेषक जयंतो रॉय चौधरी। जयंतो जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू एंड थैंक यू निशित। We begin with the headlines. Shiromani Akali Dal announces first list of 7 candidates in Punjab. Fields Daljit Singh Cheema from Gurdaspur. BJP National President JP Nadda holds public gatherings in Chumukedima, Nagaland. Amit Shah and Nirmala Sitharaman campaigns in Tamil Nadu. Bahujan Samaj Party Chief Mayawati addresses rally in Haridwar, hits out at Congress for anti-Dalit policies. शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में 7 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। गुरदासपुर से दलजीत सिंह चीमा को मैदान में उतारा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नागालैंड के चुमुकेदिमा में जनसभा की। अमित शाह और निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु में किया प्रचार और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने हरिद्वार में रैली को संबोधित किया। दलित विरोधी नीतियों के लिए कांग्रेस पर साधा निशाना। In Punjab, the Shiromani Akali Dal today announced the candidates for 7 out of the 13 Lok Sabha constituencies. A party spokesman said that the first list of 7 candidates is being released as per the decision of the core committee. Professor Daljit Singh Cheema is fielded from Gurdaspur Lok Sabha constituency. Prem Singh Chandu Majra from Anandpur Sahib, N.K. Sharma from Patiala, Anil Joshi from Amritsar, Bikram Singh Khalsa from Fatehgarh Sahib, Rajwinder Singh from Faridkot and Iqbal Singh Jhunnan from Sangrur Lok Sabha constituency. The spokesman said that the candidates for 6 remaining constituencies in the state will also be announced soon. बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में देश में प्रतिवर्ष 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और गरीब परिवार की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने आज पटना में परिवर्तन पत्र नाम से पार्टी की घोषणा पत्र को जारी किया। पार्टी ने वायदा किया है कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। घोषणा पत्र में 24 जन वचनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। श्री तेजस्वी यादव ने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी से मुक्ति मुख्य मुद्दा है। पार्टी ने वायदा किया है कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना बदल दी जाएगी और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि गोपालगंज, भागलपुर, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में 5 नए हवाई अड्डे खोले जाएंगे। The BJP National President JP Nadda addressed an NDA rally at Agri Expo Chumukedima in Nagaland this afternoon. He assured that Prime Minister Narendra Modi's vision for the Northeast is not limited to Act East, but also to make this region a gateway to South Asia and East Asia. Mr. Nadda said that under the Congress rule, the Northeast was marred by divisive politics, but under the BJP NDPP rule, it has been transformed into a divine model. Mr. Nadda said 11 peace accords were signed, 9,500 insurgents of the region surrendered, while there has been 71% reduction in insurgency incidences. Holding a roadshow at Kanyakumari, senior BJP leader and Union Minister Amit Shah said Prime Minister Narendra Modi is very concerned for the people of Tamil Nadu as he gave importance to the Tamils by keeping the Sangol
in Parliament. Mr. Shah alleged that the DMK is against Sanatan Dharma and Ram Temple in Ayodhya and hurt the sentiments of the majority. He said the BJP is taking all sections of the society along towards a developed India. Mr. Shah said that the DMK Congress are synonymous with scams. Another senior BJP leader, Nirmala Raman, campaigned at Tanjavur. She said the BJP government has implemented many schemes during the past 10 years. She added that the DMK Congress alliance is only making hollow claims. Senior BJP leader and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath said that with the world-class infrastructure, India is now being recognized as a global leader. Addressing a public meeting in Moradabad today, he said that India is providing a model of development and welfare for the world. उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मध्य प्रदेश के पांडुरणा में विपक्षी गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि इस गठबंधन में कोई एक नेता, एक विचारधारा और एक नेतृत्व नहीं है। इनका संकल्प भी एक नहीं है और इनके घोषणा पत्र में भी समानता नहीं है। And the General Secretary of the All India Congress Committee and senior leader Priyanka Gandhi Vadra addressed an election rally at Ramnagar in Uttarakhand today. She accused the BJP government of unemployment and inflation in the last 10 years and said that the prices of gas cylinders and petrol diesel have increased during the tenure of the BJP. Emphasizing that the election should be fought on issues, Priyanka Gandhi Vadra asked the BJP of the issues their party was going with among the people in this election. She called upon the public to exercise their vote in the elections by assessing the changes in their living standards in the last 10 years. और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज हरिद्वार में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी अपनी दलित विरोधी, जनजातीय लोगों विरोधी और कई अन्य गलत नीतियों के कारण सत्ता से बाहर है। क्या कहेंगे आप जयंत? तो ये जो पीरियड है, अगले हफ्ते ही इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, फर्स्ट फेज अगले ही सप्ताह है, सो ये समय बहुत जो रैलीज और रोड शोज है उनकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी और बहुत इम्पोर्टेंट है जो कैंपेनिंग का ये फेज है। बहुत इम्पोर्टेंट फेज है क्योंकि क्या खुद ही कह रहे हैं कि 19 तारीख से इलेक्शन है जी। तो उससे पहले नेचुरली रोड शोज का संख्या बढ़ेगा क्योंकि ये 7 चरणों में हो रहा है, तो इसलिए काफ़ी देर तक ये कैंपेन चलेगा। अभी तक आपने देखा ही है कि बीजेपी जो कि मुख्य पार्टी है, अभी रूलिंग पार्टी है, वो अपना मैनिफेस्टो अभी तक निकाला नहीं है। वो आखिर वक्त तक इंतज़ार कर रहा है, शायद सोमवार को या मंगलवार को निकाले। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। ये आने के बाद ऑलरेडी बातचीत चल रही है कि पहला 100 दिन में क्या करेंगे वगैरह। तो वो सारे बातें और मुद्दे जो हैं उनको उठा के इलेक्शन की जो कैंपेनिंग चल रही है उसमें और एनर्जी आएगी। नेचुरली अगर उन्होंने कुछ बोला तो उसके बाद विपक्ष भी कुछ ना कुछ अपना रास्ता, अपना जो विजन है वो उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो देखा जाएगा। ये अब गर्मी बढ़ेगी, गर्मी घटेगी नहीं। Jayanto, I would like to draw your attention to the Tamil Nadu elections this time. It is certainly going to heat up this time like never before, especially with the BJP banking heavily, I believe, on the Annamalai factor, and also with the all kind of noises the opposition making over there. Of course, the ruling party, the DMK over there, making all sort of noises over there. How do you see this shaping up in the coming days? Well, DMK does seem to have an upper hand. There's no doubt about that. It has played a number of cards, including it has brought up their angst against the center, money, etc., etc. But at the same time, BJP has managed to make a lot of headway into the southern states. Its vote share will certainly go up, even if it does not manage to get enough significant number of seats. Its vote share is certainly likely to go up. One reason, of course, is also because BJP will be fighting alone this time and not along with the AIADMK as it did last time. True. So its vote share will certainly go up. That will establish BJP as a party of significance within that state, which is what the BJP really wants to do. It does not want to get a huge number of seats from Tamil Nadu. It will not also get it. There's a likelihood of 2 seats where they are fighting, which is going to be heavily contested. One of them is, of course, Madras South. The other is Coimbatore. Mm-hmm. Beyond that, there is not
much of a contest between BJP and DMK. The AIA-DMK has grown weaker over the years, so the DMK has actually a golden opportunity here. But let's see how it actually shapes up, because elections like cricket are something which you cannot predict till the last moment. Now, listeners, election manifestos are an integral part of free and fair democratic elections. Now, they are like a blueprint for the people to visualize the possibilities of change and development in the post-election period. Now, why are they important? Now, let us listen to a report filed by our correspondent Arpita Chaudhary. The term manifesto originates from the Latin word manifestum, meaning clear or conspicuous. Defined by the Oxford Dictionary as a public declaration of the policies and aims of a group, such as a political party, election manifestos serve as official statements of intended policy by political parties at the start of election campaigning. They provide a basis for evaluating whether a political party, once elected, is delivering on the commitments made to voters during the election. Recognizing the potential for political parties to make unrealistic promises and offer freebies to attract voters, the Supreme Court of India, in the case of S. Subramaniam, Balaji versus Government of Tamil Nadu and others, directed the Election Commission of India to establish guidelines for the contents of election manifestos in consultation with recognized political parties. These guidelines, in accordance with the Part 8 of the Model Code of Conduct, require that election manifestos adhere to certain principles. For example, they should not contain anything contrary to the ideals and principles of the Constitution, or exert undue influence on voters. Additionally, manifestos should provide transparency by explaining the rationale for promises and indicating how they will be financed. Furthermore, political parties should only seek the trust of voters in promises that are feasible to fulfill. The Election Commission has issued notices to parties in the past, such as the All India Anna Dravida Munnetra Karagam, Aam Aadmi Party and Samajwadi Party, for violations of these guidelines, including instances of encouraging bribery during elections. While the primary aim of an election manifesto is to attract voters and win elections, their significance goes beyond mere campaign rhetoric. आपका फिर स्वागत है लोक निर्णय 2024 में। जयंत, आपसे जानना चाहेंगे कि मैनिफेस्टोज की बात अभी हुई है। फ्राइडे को कोयम्बटूर के लिए स्पेसिफिकली मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी किया है, जिसमें 100 प्रॉमिसेस हैं जो 500 दिनों के बीच पूरे किए जाएंगे। सो ये लोकल मैनिफेस्टोज भी होते हैं, रीजनल मैनिफेस्टोज भी होते हैं, आप हमें बता सकते हैं? हाँ, हो सकता है। ये तो ऑलवेज किया जाता है, काफ़ी बार किया जाता है, ऐसा नहीं कि पहले बार हो रहा है। बट हाँ, कोयम्बटूर के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि कोयम्बटूर में, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन दैट पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ पे उन्होंने ये बातें की। अब ये जो बातें उन्होंने की है, ये सिर्फ कोयम्बटूर के लिए नहीं है, इनमें से काफ़ी सारे बातें वो अपना जो प्रिंसिपल मैनिफेस्टो जो रिलीज़ करेंगे उसमें रहेगा। तो वो बात कर रहे हैं अभी 500 दिन के जी, मतलब वो ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि 1.5 साल में कितना क्या करने चाहते हैं या क्या क्या करने जाएंगे। तो ये यही तरीका है जिसके बारे में ये कह रहे थे कि मैनिफेस्टो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वोटर को समझा रहे हो ये मेरा वायदा है, ये मेरा प्लान है। और वायदा सिर्फ नहीं है, वायदा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम कह सकते हैं हम चांद में जाएंगे, परंतु जाने का हमारे पास जरिया है या नहीं है वो भी आपको समझाने पड़ेगा वोटर को, और उसी से वोटर शायद प्रभावित हो पाए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैनिफेस्टो सारी दुनिया में मैनिफेस्टो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और ज़्यादातर आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी भी, जो भी विनिंग पार्टी होती है या विनिंग कोalition होती है, उनके मैनिफेस्टोज जल्दी से जल्दी निकाल लेते हैं और पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको इस हिसाब से अपना प्लान बनाने पड़ेंगे कि अगर जो भी रूलिंग पार्टी है हाँ उसने कहा कि मैं हाईवेज बनाऊंगा, तो हाईवे डिपार्टमेंट को बात करने पड़ेगा उसके बारे में। अगर उन्होंने कहा कि मैं लिटरेसी फॉर ऑल लूँगा, तो उसके लिए उसको क्या करने पड़ेगा, कहाँ कहाँ स्कूल खोलने पड़ेंगे, कितने पैसे खर्च लगाने पड़ेंगे, वो सारा प्लानिंग करने पड़ता है। So mostly, Jayanto, we can say that it's mostly a statement of intent coming from the parties. Statement of doable intent. Doable intent, that is one. And of course, talking in business terms, we take a corollary. It's mostly a red herring prospectus, we can say. It's a red herring prospectus. It is not necessary that every single promise which has been made is kept. But nowadays, parties have also started issuing their, action taken plan. Like ministries do, they also give it. We promised you this, and in these 5 years, out of the 100 promises, we have
been able to do 95, 92, whatever it is. They at least make those claims. Absolutely. So it depends on the electorate how discernible they are. How discernible it is, because also there are certain times there are issues which overshadow everything else. Absolutely. And then your voter does not really bother about manifestos, promises, etc. It's time for a quick break, but do stay tuned in because we have lots coming up on the other side. Lok Nirnaya 2024, a special program on the general elections, every evening at 7 and repeat broadcast at 9:30 p.m. on Akashvani Gold. Updates of election activities, insights from regions and constituencies, expert opinion and analysis. In the world's largest festival of democracy. Stay tuned to Lok Prasarak ke Sath, Lok Nirnaya 2024. लोक निर्णय 2024 में आपका फिर स्वागत है। और अब उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र के ब्यौरे के साथ हैं हमारे क्षेत्रीय संवाददाता फैजानुल हक। बिजनौर लोकसभा सीट 3 जनपदों की सीमाओं के अंतर्गत आती है, जिसके कारण क्षेत्रफल के हिसाब से यह एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। बिजनौर लोकसभा की मीरापुर तथा पुरकाजी विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर जनपद में, जबकि हस्तिनापुर विधानसभा सीट मेरठ जनपद की सीमाओं में है। 17,33,000 से अधिक मतदाता आगामी 19 अप्रैल को बिजनौर लोकसभा सीट के 11 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। बिजनौर लोकसभा सीट में 1,837 मतदेय स्थलों पर 9,21,201 पुरुष, 8,12,098 महिला तथा 91 थर्ड जेंडर के पंजीकृत मतदाता हैं। इस बार एनडीए गठबंधन से मीरापुर विधायक चंदन चौहान, सपा से दीपक सैनी तथा बसपा से चौधरी विजेंद्र सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बिजनौर में सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जनता के बीच जाकर स्वयं और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों से आगामी चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करने की जी तोड़ कोशिश में जुट गए हैं। और नैनीताल उधम सिंह नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोफाइल आप तक ला रही हैं हमारी क्षेत्रीय संवाददाता साक्षी सिंह। लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से इस बार 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, कांग्रेस के प्रकाश जोशी, बसपा के अख्तर अली और उत्तराखंड क्रांति दल के शिव सिंह सहित 10 प्रत्याशियों ने चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। इस सीट पर 2 उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 14 विधानसभा क्षेत्रों से बनी इस लोकसभा सीट पर इस साल 20,15,809 मतदाता चुनाव में उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। सुगम मतदान के लिए इस संसदीय क्षेत्र में 2,328 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वर्ष 2019 में हुए सामान्य चुनाव में गढ़वाल की इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। भाजपा के अजय भट्ट ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के हरीश रावत को 3,39,096 मतों से हराया था। क्या लगता है आपको जयंत, तो इन दोनों सीट्स में जो उत्तर भारत की हैं, किस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट? क्या वही पार्टी दोबारा आएगी पावर में या क्या आपको लगता है? कहना मुश्किल है इस वक्त। ये नैनीताल कुमाऊं का जो अंचल है, यहाँ पे बीजेपी पिछले बार काफ़ी अच्छा किया था। अजय भट्ट ने ही 61% का वोट शेयर रखा था। हरीश रावत के खिलाफ वो लड़े थे। इस बार कैंडिडेट अलग है, प्रकाश जोशी है। देखते हैं कांग्रेस ने अपना कितना काम नए किया कैंडिडेट हैं तो देखने पड़ेगा। बहुत सारे लोकल मुद्दे भी रहते हैं जिसके कारण से वोट काफ़ी बार इन्फ्लुएंस्ड होता है। देखने पड़ेगा कि किसका पल्ला भारी है। पर ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये काफ़ी बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी इनफैक्ट। नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र अगर आप रेंज देखें इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलता है। And now we travel to Coimbatore in Tamil Nadu, wherein we are joined in by our correspondent Joy. The Coimbatore Lok Sabha constituency has 6 assembly segments, namely Palladam, Sulur, Kaundampalayam, Coimbatore North, Coimbatore South and Singanallur. In the 2021 assembly elections, 5 constituencies went to AIADMK and 1 went to BJP, where actor politician Kamal Hassan lost it to BJP's Vanathi Srinivasan in a narrow difference of 1,728 votes. Coimbatore Lok Sabha constituency has been in existence since 1952. The constituency has the left parties has won 6 times, Congress thrice and DMK twice. C.P. Radhakrishnan, presently governor of Jharkhand and Telangana, was elected from this constituency in 1998 and 1999. Presently, this constituency has a 3-cornered contest in which Singhe P. Ramachandran of AIADMK, former mayor presently in DMK, P. Ganapati Rajkumar
and State BJP President K. Annamalai are contesting. The former IPS officer K. Annamalai has been in the fray for assembly elections in Aravakurchi in 2021. The total electorate in Coimbatore is 30,81,594 voters. The race for the chair in Lok Sabha has become fierce, with the campaigning reaching feverish pitch, with almost VVIPs of all parties garnering votes for their candidates. Coimbatore, Jayanto, this time is garnering really too much of attention, and of course it's going to be a very interesting fight with the Annamalai factor coming in. He seems to be the X factor this time. How do you see this? It's an interesting battle. First of all, the Prime Minister has focused a lot of attention on this constituency, which makes it a very heavyweight one. Annamalai is obviously their trump card in Tamil Nadu. He's an IIM Lucknow product. He's a former civil servant, and you have against him the AIADMK's Ramachandran, who is also an IIM product. IIM Ahmedabad. It's doubly interesting. Yeah, so it makes it doubly interesting. But the real fight will be between DMK and Annamalai. AIADMK is part of the game, but it's not really the game. पर आपको लगता है कि डीएमके में जो लॉयल्टी फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है? इनफैक्ट लेट जो उनके सुप्रीमो है एम करुणानिधि, अभी तक उनका जो लॉयल्टी फैक्टर है वो वर्क करता है वोटर्स के साथ? हाँ, लॉयल्टी टुवर्ड्स डीएमके ऑफ इट्स वोटर्स इज वेल नोन. Let's see how the entire game plays out. But it's going to be interesting because this is one constituency where BJP has a good chance of making some kind of a headway. So if it does manage to somehow swing it, even if it is by a few thousand votes, it's a big gain for BJP. As I was earlier speaking about, there are perhaps two constituencies where BJP has a good chance in Tamil Nadu. So let's see how it goes. And of course, it is known as the Manchester of India. It's a very highly industrialized city. Industrial, garments industry, etc. are very important industries here. So the woes of that industry will also reflect in this election. So let's see how it goes. जी, और अब महाराष्ट्र के हमारे क्षेत्रीय संवाददाता मनोज क्षीरसागर पुणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी. जी धन्यवाद. जी बताएं हमारे श्रोताओं को कि पुणे में चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए क्या विशेष उपाय किए हैं, और महाराष्ट्र में तीसरे चरण के प्रमुख उम्मीदवारों के बारे में भी बताएं. जी जरूर. मेरे पास कुछ रोचक जानकारी है. मतदाताओं की जागरूकता को लेकर पुणे चुनाव आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहा है, क्योंकि पुणे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2019 में चुनाव में सबसे कम प्रतिशत दर्ज किया गया था. इसलिए जिला प्रशासन चुनाव को मतदाताओं के दरवाजे तक पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है. मतदाता सूची का राष्ट्रीय स्तरीय विशेष सारांश पुनरीक्षण भी पुणे से ही शुरू किया गया था. इसके अलावा जिला चुनाव प्रशासन द्वारा एक अनूठी पहल की गई. गृह निर्माण सोसाइटी मतदाता पंजीकरण अभियान लागू किया गया, जिसका उद्देश्य पुणे जिले में हाउसिंग सोसाइटी जो है उसमें पूर्ण मतदाता पंजीकरण प्राप्त करें. इसका नतीजा ये हुआ कि पुणे में चयनित 35 हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर इस बार चुनाव बूथ स्थापित किए जाएंगे, जो देश में अपनी तरह का पहला कदम है. मतदाताओं की संख्या के बारे में बोले तो पुणे जिला राज्य में अग्रणी है, और यहाँ अन्य जिलों की तुलना में मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है. मतदान में 20 से 39 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की भूमिका अहम होगी इस बार. इसका कारण यह है कि इस आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या जिले में कुल मतदाताओं की संख्या का 41% से अधिक है. इसलिए प्रशासन केंद्रित कार्यक्रम एवं यहाँ तक कि नुक्कड़ नाटक जैसे पारंपरिक मीडिया का भी उपयोग करके चुनाव प्रक्रिया में पात्र युवाओं को पंजीकरण, उसके साथ साथ भागीदारी भी उनकी सुनिश्चित कर रहा है. पुणे जिले में 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं: पुणे, बारामती, मावळ और शिरूर. इनमें से पुणे, मावळ और शिरूर इसमें चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा, जबकि बारामती में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा. लगभग 1 महीना बाकी है, इसलिए जिले में राजनीतिक दलों द्वारा अभी तक कोई बड़ी प्रचार मुहिम नहीं की गई है. बीजेपी ने शहर के पूर्व मेयर मुरलीधर मोहोळ को मैदान में उतारा है. ये सीट निवर्तमान भाजपा सांसद गिरीश बापट की मृत्यु के बाद से खाली थी. कांग्रेस ने दूसरी ओर रविंद्र धंगेकर को मैदान में उतारा है, जो मौजूदा विधायक है. उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर विभाजन के बाद बारामती, यहाँ पर बड़े पैमाने पर टकराव की आशंका है, जहां मौजूदा सांसद और वरिष्ठ नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे, इनको वर्तमान उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने सीधी लड़ाई का सामना वहां करना उनको पड़ रहा है.
मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और जयंतो, आप क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं, कैसा देखते हैं वहाँ पे? 48 सीट है महाराष्ट्र में। इस बार काफ़ी रोचक रही, क्योंकि पिछले बार देखिए शिवसेना और बीजेपी एक साथ थी और एनसीपी और कांग्रेस एक साथ थे। अब एनसीपी टूट गया है, एनसीपी का एक हिस्सा बीजेपी के साथ चला गया, शिवसेना भी टूट गया है, तो एक हिस्सा इस तरफ आ गया, एक हिस्सा उस तरफ आ गया है। अब ये जो मंथन हुआ है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और जिस तरह से सरकार तोड़ी गई, एक तरह से नया सरकार तैयार हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट है वोटर्स पे, वो कहना इस वक्त मुश्किल है। पिछले चुनाव के हिसाब से बीजेपी वॉज दी नंबर 1 पार्टी इन महाराष्ट्र। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे कि असेंबली इलेक्शंस में भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर आई थी। उसके बाद तो फिर सरकार जिस तरह से बना था शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की, फिर वो टूटा, बहुत कुछ हो गया है, बहुत पानी बहा है उसके बाद। पर देखी जाएगी इस बार किस तरह से वोटर बिहेवियर होगा, उस पर बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। और पूना एक अहम कह सकते हैं एक जगह है जहाँ पे पता लगेगा कि किस तरह से लोग सोच कर रहे हैं. Absolutely, the churn in Maharashtra is going to throw up some really interesting facts and figures this time. But in the meantime, we are joined in by our Karnataka correspondent Sudhindra from Bengaluru. Sudhindra, nominations for the third phase have begun in Karnataka. Now, what's the update on key candidates contesting in this phase? And Sudhindra, any news on the election campaign part? Yes, in third phase also the nominations are being filed in Karnataka. On the first day itself, 41 candidates filed 57 nominations. That is yesterday. Vishweshwar Hegde Kageri, Sri Ramulu and Umesh Jadhav filed their nominations from BJP, and from Congress, E. Tukaram, Hanumant Rao Algur, Dr. Prabhu Mallikarjun and Radhakrishna Dodmani filed their nominations yesterday. And senior BJP leader K.S. Ishwarappa filed his nomination as an independent candidate from Shimoga, and Congress rebel candidate Vinay Kumar filed his nomination as an independent from Davangere. Well, as the campaign for the second phase and the third phase election in Karnataka has been phenomenal, I should say. You know, Prime Minister Narendra Modi is arriving to the state tomorrow. He will address a public rally in Mysuru and will be part of a road show in Mangaluru. Congress National President Mallikarjun Kharge was in his hometown Kalburgi yesterday, and Chief Minister Siddaramaiah and Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar have been campaigning in the old Mysore region on a daily basis. Thank you, Sudhindra. Now, Jayanto, BJP in Karnataka has thrown up really some big names this time. Like always, to name a few, like Jagdish Shettar, the erstwhile Chief Minister, and Basavaraj Bommai, of course, who was the earlier Chief Minister this time. After the Congress took over, Prahalad Joshi, and of course the star boy Tejaswi Surya from Bangalore South. So how do you see this? Well, it's going to be a prestige fight, because see, BJP had done extremely well in 2019. Absolutely. It virtually swept the state at that point of time. JDS came third, of course, which was they were their partner. Mm-hmm. Congress came second, but Congress came a very, very distant second. Mm. So this time around, of course, in between there was the state assembly elections and Congress swept it. It got 135. It's formed the government. So that is another factor. But usually national elections in Karnataka do not reflect necessarily the state assembly election results. So that is what BJP is banking on, and BJP is hoping that even in this time, out of the 25 seats that Karnataka has, it will actually do much better than what the assembly results were reflected. I mean, you're talking of the seats won last time. Yeah. Okay. So they will try and come nearer the figure that they had in 2019. Whether they get that figure or a little less, they are hoping that they will still be the number one party in the Lok Sabha polls in Karnataka, which is why a lot of big guns as far as candidates and big guns in terms of campaigning has been focused on Karnataka. Karnataka is their best bet in South India. Mm-hmm. And for Congress, it's also a prestige battle, because they have just won the assembly elections. If they do badly in the national elections, then it means it's a flash in the pan. Absolutely. So it's going to be a terrific battle there. Let's see what happens. It's going to be very, very, really very interesting this time. So
Jayanto, thank you so much for you having discussed various issues and enlightened our listeners with your valuable inputs. Thank you so much, Jayanto. थैंक यू सो मच निशित एंड थैंक यू सोनू. थैंक यू. इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे संवाददाताओं और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद. हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप लोकसभा सीट की तय तिथि पर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं. With this, we conclude this program. We'll bring you more election-related news and political developments tomorrow at the same time. Until then, namaskar. लोक निर्णय 2000